Hello friends, I welcome you all again to this session based on comprehension. And दोस्तों आज हम फोकस करेंगे on parajumbles. Parajumbles or the other term for this is sentence sequencing. Now what is this question? क्या होता है इस question के अंदर? In this you may get 4 sentence type question, 5 sentence type question और 6 sentence type question जो मिसअरेंज किए होंगे एंड यू हैव टू अरेंज दोज सेंटेंसेस. उन सेंटेंसेस को आपको अरेंज करना होता है इन अ सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ. सो व्हाट इज द टिप? किस तरीके से इस सेंटेंसेस को हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट, आइडेंटिफाई द मैंडेटरी पेयर. द सेट ऑफ सेंटेंसेस आर देयर. सपोज ये 4 टाइप सेंटेंस होगा तो यू हैव टू अरेंज ऑल द 4. Suppose it is 6 sentence type question. So sentence number 1 and sentence number 6 will be fixed. And जो बीच में 4 है वो आपको अरेंज करना है. And what is the way to do this? कैसे करना है उसको? Identify the mandatory pair. Out of those 4 sentences जो आपको अरेंज करना है, just see उस जोड़ी को ढूंढिए कि कौन से 2 sentences संग रहेंगे. And if you are able to identify the mandatory pair, your work is half done. Then identify the transitory words. Now what do you mean by these transitory words? There will be जो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जो शिफ्ट करता है, जो ट्रांजिशन होता है, the words like also, again, as well as, besides, further, in addition to, likewise, moreover, ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स है. ऐसे वर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करना है. लिंकर्स, और देखिए कि इन वर्ड्स के संग कौन सा सेंटेंस लिंक करता है एंड विच सेंटेंसेस बिकम द मैंडेटरी पेयर. एंड फाइनली यू ऑल्सो हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोनाउन. तो पहले आइडेंटिफाई द नाउन, देन आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन दिस. प्रोनाउंस, यस यू ऑल नो, ही शी इट, जैसे उसके संग यूज होता है, यू हैव टू पुट अप इन दैट पर्टिकुलर. सो फर्स्ट आइडेंटिफाई द मैंडेटरी पेयर. देखिए कौन से 2 सेंटेंसेस संग रहेंगे, which sentence should follow which sentence. Identify the transitory words, and इतने सारे transitory words for example है, there are more words also but these are few of them. And identify the noun as well as the pronoun. So ये तरीका होता है इस sentence. Please options में जो दिए होंगे उसको एक एक करके मिलाने की कोशिश मत करना. No doubt your answer finally will be correct but you will land up spacing or using lots of time. सपोज एक सेंटेंस हम लेते हैं. समझाने के लिए जस्ट टेक दिस सेंटेंस. यस, गिव मी अ मिनट, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ ताकि यू अंडरस्टैंड एज टू. Sachin, he has hit many centuries. Sachin Tendulkar is the greatest cricketer. The best century was against Pakistan and Sachin started playing cricket since childhood. Started playing cricket. So I am just taking an example of 4 sentence type. Suppose this is P, this is Q, this is R and this is S. And the options आपको जो दिए जाएंगे एग्जाम के अंदर, 4 options will be given, you have to identify. Now when such type of sentences is there, yes, first identify the proper noun, nouns, and then later on common noun, pronoun, linking pairs,
लिंकिंग वर्ड्स या इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जैसे आप इसमें देखेंगे कौन सा सेंटेंस इंट्रोड्यूस करेगा। इफ यू जस्ट सी दिस सेंटेंस कंप्लीटली, यहाँ पे कंप्लीट नाम दिया है सचिन तेंदुलकर, फाइन। अब इससे लिंक क्या कर रहा है, ही, यस प्रोनाउन है, नाउन के बाद प्रोनाउन फॉलो करता है, फाइन। बट हियर आप देखोगे सिर्फ सचिन दिया हुआ है, सो दिस सचिन अ पार्ट ऑफ दिस पार्ट, सो आर शुड बी फॉलोड बाय पी, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। सो दिस इज द मैंडेटरी पेयर आर एंड पी, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं कि कौन सा होना चाहिए। ही हैज हिट मैनी सेंचुरीज, द बेस्ट सेंचुरी वॉज अगेंस्ट पाकिस्तान। अब ये ही किसके लिए, ही आई एम यूजिंग फॉर सचिन, एंड नाउ दिस इज द कनेक्टर। ये जो लिंकिंग वर्ड है सेंचुरी, आप देखिए यहाँ पे हिज बेस्ट सेंचुरी, ये कनेक्ट कर रहा है। दिस इज द कॉमन फ्रेज बिटवीन देम। उसकी सबसे अच्छी सेंचुरी, उसने काफी सेंचुरी मारी है, बट उसकी बेस्ट सेंचुरी ये थी। सो Q will follow S, so RPQS, so this becomes your correct example. ये आपका correct formation structure रहेगा to form a meaningful paragraph. I hope this is clear. So identify the connectors, identify the pronouns, identify the transitory words, identify the mandatory pair, and if you are able to identify the introductory sentence, कौन सा sentence पहले रहेगा, from the options you can straightway check out and which is the option which is most appropriate. So दोस्तों Parajumble is not difficult, आराम से you can score full marks and students score full marks, but please solve it in a sensible way. We take some examples now, कुछ examples लेते हैं आगे. Read the instruction very carefully. In the following item, some part of sentences have been jumbled up. You are required to rearrange the jumbled parts labeled P, Q, R and S to form or produce the correct sentence. Choose the proper sequence from the alternatives A, B, C and D given to you. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, 4 सेंटेंस टाइप से स्टार्ट करते हैं. Yes. An example in front of you. एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आएगा. Rearrange the given group of words to make a meaningful sentence. 4 sentences are given. अब हम ले रहे हैं example of 4 sentence type and you have to arrange all these 4 sentences and form a meaningful or coherent paragraph. A consumer protection drive to educate. तो अब ध्यान से पढ़ लिया पहले. Against using fraudulent means, the people about their rights and to warn traders. The administration will soon launch. Now, देखिए, what do you feel? कौन सा sentence will be the introductory sentence? P, Q, R or S? अगर आप ध्यान से देखोगे, नाउन्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दिस बिकम द इंट्रोडक्टरी, जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं. द एडमिनिस्ट्रेशन विल सून लॉन्च. सो नाउ यू आइडेंटिफाइड दिस एस इज द बिगिनिंग. एस इज द बिगिनिंग. नाउ ऑप्शंस भी देखो लो एक बार, यू कैन मेक दिस ट्रिक. हो सकता है सब 4 में से सिर्फ, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट एस इज द बिगिनिंग, एस इज द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, आपका काम हो जाएगा इफ एस इज ओनली इन वन ऑफ द ऑप्शंस. बट इसके अंदर 3 options have S. So now eliminate out, ये तो आपका ये गलत हो गया and so on. Now try to see S के संग which becomes the mandatory pair. The administration will soon launch a consumer protection drive to educate the people. So to educate whom? The people. So P and R. P and R एक मैंडेटरी पेयर आपकी बन जाती है. P and R आपकी एक मैंडेटरी पेयर बन जाती है. So S, P, R and then finally the sentence becomes Q. So now your sentence reads as, the administration will soon launch a consumer protection drive to educate the people about their rights and to warn traders against using fraudulent means. So आपका सेंटेंस क्या बनता है? This should be the correct option. Yes, you have identified the introductory sentence. लिंकर्स देख लिया आपने. Your work is done. So yes, कौन सा सही आंसर है? The correct answer is option number A, S, P, R, Q. And if you were able to identify this, P and R आपने आइडेंटिफाई कर लिया था. Yes, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है. So anyway, आपको पता था, एलिमिनेट कर दिया. दिस वी एलिमिनेटेड अर्लियर.
इसको हम बाद में एलिमिनेट करते हैं, बिकॉज इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दिस मैंडेटरी पेयर कि दीज टू सेंटेंसेस आर टुगेदर, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया था, स्ट्रेट वे द अदर्स आर एलिमिनेटेड एंड फ्रॉम दिस SPR पुट अप दिस सेंटेंस, देख लो ऑप्शन से एंड यू कम अप विद द करेक्ट आंसर. यस, एंड इट्स नॉट दैट आप पहले SRPQ को देखो फिर QRPS you put up together. Please don't do that mistake. Solve this question in a very sensible way. It's easy to score full marks where Parajumbles is concerned, not at all difficult. Yes, but sentences आपको ध्यान से पढ़ना है, read it very carefully and then you will find some common words. Yes, I just showed century, सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल अभी बताया था. In that way you have to find the common words and that those become the mandatory pair. And कॉमन प्रॉपर नाउन रहेंगे फॉलोड बाय प्रोनाउंस एंड सो ऑन, एंड ट्रांजिटरी वर्ड्स आपको ढूंढना है. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, लेट्स मूव ऑन एंड सॉल्व दिस वन. अब दूसरा सेंटेंस आपके सामने. नो पार्ट ऑफ दिस पब्लिकेशन मे बी इन एनी फॉर्म विदाउट द रिटर्न परमिशन ऑफ द पब्लिशर ऑफ द बुक रिप्रोड्यूस्ड, स्टोर्ड और ट्रांसलेटेड. What can you identify? What should be the introductory sentence or which should be the introductory sentence? कौन से सेंटेंस से स्टार्ट होना चाहिए? P, Q, R और S. No part of this publication in any form. No doubt ये तो होगा नहीं. Of the publisher हो नहीं सकता है. Reproduced, comma. Yes, this sentence looks to be incomplete. So now you have identified. Yes, I hope you agree that P, the sentence should start with P. जब आप देख रहे हो सेंटेंस स्टार्टिंग विथ P, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, एलिमिनेट कर दीजिए. A एंड R से एलिमिनेटेड. नाउ यू आर लेफ्ट विथ ओनली 2 ऑप्शंस. अब और काम इजी करते हैं. नो पार्ट ऑफ दिस पब्लिकेशन मे बी इन एनी फॉर्म विदाउट द रिटर्न परमिशन ऑफ द पब्लिशर. दीज आर गोइंग टुगेदर. सो Q एंड R आर गोइंग टुगेदर. Q एंड R कहाँ आपको नजर आ रहे हैं? यहाँ पे आ रहे हैं. यस, Q एंड R आर गोइंग टुगेदर. So no part of the publication may be reproduced, stored or transmitted in any form. So Q आ गया था. तो what was the starting part? First sentence was P, then it is followed by S, followed by Q and followed by R, because you know QR was the mandatory pair. QR यहाँ पे mandatory pair था, यहाँ the R and Q were separate. So this also आप एलिमिनेट कर सकते थे. इफ नॉट, अगर आप दोनों ऑप्शन में भी रख के देखेंगे, द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी PSQR एंड दिस इज द करेक्ट ग्रामेटिकल लॉजिकल स्टेटमेंट. एंड आपका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, वेयर दिस सेंटेंस इज कंसर्न्ड. So B is the correct answer. Now one next sentence for you. अब आप सॉल्व करोगे इसको, देखिए विच शुड बी द करेक्ट ऑप्शन. आई गिव टाइम टू यू. देखिए एंड यू कैन गिव द आंसर्स इन द चैट बॉक्स एज वेल. चैट बॉक्स में आप टाइप करके भेज सकते हैं आंसर्स अगर आप चाहो तो. Yes, कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो. व्हाट शुड द सेंटेंस बिगिन विद? द सेंटेंस इज इन फ्रंट ऑफ यू. देन द वर्ल्ड विल एवर्ट all future wars. This cannot start with it. And agree to obey all the laws. If all the nations work together. अब यहाँ पे noun introduced हो रहा है. The noun is being introduced over here. So the sentence should start with R. The sentence should start with R. So as per this, eliminate कर दो आप दो option. If all the nations work together and agree to obey the laws. तो ये करेंगे. Then the sentence will join. Then the world will avert all future wars. So R is the introductory sentence, followed by Q, followed by P, and then this will be followed by sentence number R for the common good of the humankind. So which is the correct option over here? R, S, Q, P or which one? बताइए कौन सा सही रहेगा? R, S, Q, P और R, S, PQ, कौन सा सही लगता है आपको?
Yes, so it is the correct answer. The correct option is option number C, R. Sorry, R. ये इसको start करा था R. So if all the nations work together for the common good of humankind, ये इसको match कर रहा है. So R and S are going together, followed by Q and agree to obey all the laws. Then the world will avert all future mistakes. And ये option आ रहा है option number C. So this is the way you have to solve these examples. थोड़ा tricky रहता है but not difficult. Some more sentences. देखिए इसको. Rearrange the given groups of words to make a meaningful sentence. For the vehicles carrying food items, the center has made it mandatory to display all details on the windshield and the rear glass. Now, where is the noun being introduced? Where is the introduction? Noun कहाँ पे introduce हो रहा है? The center has made it mandatory. So the question will start with Q. Oh ho! All the sentences are starting. Option में सब sentences में Q beginning है. Yes. And अगर आप यहाँ से भी देख के करोगे तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए. You know the beginning is Q. ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है. ना उसके बाद देखना है आपको कि what should it follow. क्या फॉलो करना चाहिए. द सेंटर हैज मेड इट मैंडेटरी. किसके लिए? फॉर द व्हीकल्स कैरिंग फूड आइटम्स. यस. सो क्यू के बाद इट शुड बी फॉलोड. सो फर्स्ट इट इज क्यू, देन इट शुड बी फॉलोड बाय पी. किसके लिए मैंडेटरी किया था? फॉर द व्हीकल्स कैरिंग फूड आइटम्स टू डिस्प्ले ऑल दिस थिंग. नाउ इसके बाद ये फॉलो कर रहा है आर एंड देन इट विल बी एस. सो क्यू पी आर एस. क्यू पी आर एस कोई ऑप्शन में है? Yes, it is in option number B and this is your correct sentence. And now for the vehicles carrying food items to display. So P and R no doubt are becoming the mandatory pairs over here. And यहाँ पे if you just see it carefully, Q के संग the only sentence we should follow which is linking it is statement number P. So Q P R S should be the correct option. देखते हैं क्या है सही जवाब इसके अंदर. And the correct option is option number B with the sequence Q, P, R and S. So friends, I hope you have understood this. समझ में आ रहा होगा this topic. And parajumbles or sentence rearrangement or sentence sequencing you will find in all your exams. हर एग्जाम में where English is concerned, parajumbles के questions हमेशा आपके exams में reflect करेंगे. So you have to practice a lot. So those tips, those tricks which I have shown you, told you, I hope you have understood it and accordingly only you have to practice and solve this question. Okay, चलते हैं एक और easy example. Comparatively difficult as per the earlier ones. जो पहले शुरू के 4 किए थे उससे थोड़ा सा ये difficult रहेगा. And the options in front of you है ना, आपके समक्ष options है. Try to find out क्या होना चाहिए. Realists believe that there is an objective reality out there independent of themselves. This reality, now this word common reality, so you know Q and P ये दोनों तो संग रहेंगे. Yes or no? This is the linkers. ये common factor है दोनों में, the word reality. अब चलते हैं. They believe in the possibility. Now they कौन है? They will come later on. They will come later on. अब P के बाद ही आएगा कहीं R because this is the pronoun use. I think it's fair to say that in the position to which most working scientists suffer. Now read these sentences carefully. Important sentence है. What do you feel? पहले initial sentence क्या रहेगा? अगर first sentence आपने identify कर लिया, your work is half done. Because why? अगर आप ध्यान से देखोगे from the options, if you are able to identify the introductory statement correctly, अगर आपने identify कर लिया आपका काम तो ऐसे ही हो गया. Because of all the 4 options देखोगे सबके introductory statement और the first sentence अलग है. Yes, so इसमें identify करिए what should it be.
Realists believe that there is an objective reality out there independent for ourselves, or I think it is fair to say. Yes, what do you feel? क्या लगता है इसके अंदर सही स्टेटमेंट रहेगा? आंसर्स वेरी क्विकली सेंड इन योर चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. यस, इफ नॉट द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू. अगर आप देखोगे इंट्रोडक्टरी यहीं से स्टार्ट हो रहा है. Noun is being introduced over here in this statement only. Realists believe that there is an objective reality. Yes, P आ गया. Then they believe in the possibility. Realists believe. So now the pronoun is introduced over here. ये pronoun यहाँ पे introduce हो रहा है P and R. Now they believe in the possibility of determining whether or not this theory is indeed really true or false. ये really word आ रहा है. Now the reality, see this common factor, this reality. So P, R, Q, yes. And finally suggestion aa raha hai. I think it is fair to say that is the position to which most working scientists subscribe. So friends, don't be scared by the length or the size of the sentence. Sentence से मत डरिए, सोच समझ के करिए. Introduce, find the introductory statement. देखिए noun कहाँ पे introduce कर रहा है, if any. Followed by the pronouns, then the linkers. Yes, जैसे reality and ये link हो रहा है, ये noun हो गया है, then this is the pronoun and so on. One more example. Okay, interesting. He was bone weary and soul weary and found himself muttering, either I can manage this place or it's unmanageable. The next sentence is, to his honor, he realized that he had become the victim of an amorphous, unwitting, unconscious conspiracy to immerse him in the routine work that had no significance. Yes, a long paragraph. It was one of those nights in the office when the office clock was moving towards 4 in the morning and Benny's was still not through with the incredible mass of papers stacked before him. He reached for his calendar and ran his eyes down each hour, half hour, quarter an hour, to see where his time had gone that day, the day before, the month before. अब what do you think should be the introductory statement? इसके अंदर introductory statement क्या होना चाहिए? I feel the statement which should begin with R. ये ऐसा मुझे लगता है. What do you feel? It was one of those nights in the office when the office clock was moving towards 4 in the morning and Benny's was still not through with incredible mass of papers stacked before him. So yes, this looks to be the introductory part followed by the pronoun. Now to pronoun. He followed करता है. So what should be the option? R should be followed by Q or R should be followed by P. And the correct option for this is R should be followed by P. Yes, this is what I was just saying. अगर introductory sentence आ गया followed by the, so he was bone weary, soul weary and found himself either muttering, either I can manage this place or it is unmanageable. And then it is followed by Q. He reached for the calendar. उसने calendar को देखा, सब कुछ देखा, gone through that day, the day before, the month before. Yes. And then it is followed. Later on he realized, जब उसने check किया, yes, then he realized that he had become the victim of this. So the correct formation or arrangement is in the sequence R, P, S and Q. This is how this error spot parajumbles or sentence sequencing के questions हमको solve करने हैं. Yes. So please go through this very carefully. The sentences may be tricky, may be lengthy, but they will not be difficult. Understand the sentences very carefully. चलते हैं एक और पे. Yes. Now देखिए, ध्यान से देखिए, बताइए क्या सही होना चाहिए. The question
the quintessence. For example, a lizard is only fully understandable in the light of the particular possibilities and limitations dictated by its reptilian nature. The films we made tried to document the lives of particular animals, showing how each found its food, defended itself, coated itself. We seldom examined the basic character of its anatomy. One element, however, was missing. So we examined and one element was missing. So R और S ये तो संग जा रहे हैं. Now just try to see. P से स्टार्ट होना चाहिए या Q से होना चाहिए? What do you feel? और R से होना चाहिए या S से होना चाहिए? Read the sentence very carefully. The quintessence, for example, is a lizard is only fully understandable in the light of particular possibilities and limitations dictated by its reptilian nature. The film we made tried to document the lives of particular animals, showing how each found its food, defended itself, and courted, etc. Yes, so where is the sentence being introduced? कहाँ पे introduce हो रहा है? I hope you must have guessed it correct. सही guess कर लिया आपने. The correct answer is option number A. Option number A, that is PRSQ. It was very simple. See the noun यहाँ पे introduce हुआ है. This is the introductory statement. And then possibilities and limitations dictated by its reptilian nature. We seldom examine the basic character of its anatomy. And then the film we tried, and one element, however, was missing. And one more sentence, एक और sentence कर लेते हैं. So friends, we have done 4 sentence type. एक 5 sentence type का भी example ले लेते हैं. बाकी more examples of this 5 sentence type we can take up in the next class. But एक थोड़ा hint दे देता हूँ कि what are these 5 sentence type. 5 sentence type में क्या होता है? In this 5 statements will be given, and from this will be fixed. This you cannot change. ये आपको arrange नहीं करना है, and you have to only arrange from these options P, Q, R and S. So this is fixed during routine investigations. Yes, and if you just say investigation था, archaeologists discovered that. So Q से start हो रहा है, Q यहाँ पर हो रहा है, and I think your work is done. But examiner is not necessary that always one of the options may be the beginning. हो सकता है in all the options Q may have been the beginning. Then also let's confirm it. QRSP, Q archaeologists discovered artifacts that perfectly match. ये that किसकी बात कर रहे हैं? This that is talking about artifacts that perfectly matched. Remains from, किससे मैच करते थे? Remains from other Harappan sites. So no doubt the correct arrangement, the correct sequence is QRSP. And now this sentence will read as, during routine investigations, archaeologists discovered artifacts that perfectly matched remains from other Harappan sites. So this is the way this 5 sentence type question can also be reflected in your exams. So friends, practice this Parajumbles a lot. Easy to score, highly scoring. थोड़ा tricky रहेगा, but you should not flow with the tide. You should not find any difficulty in solving these questions based on sentence rearrangement or Parajumbles. So enjoy learning, practice, practice and practice is the only key to success. Practice करिए and see you again in the next video tutorial with some more examples of Parajumbles. So enjoy learning and see you again very soon. Thank you everyone.